ग्राफ्स ऑफ ई वर्सेस एक्स एंड वी वर्सेस एक्स, ये दो ग्राफ्स लर्न करके वी विल सी डाइलेक्ट्रिक का सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन का. ओके, सो आई विल गिव द वन डायग्राम. वी हैव टू ड्रॉ ई वर्सेस एक्स का ग्राफ का. इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको मालूम पड़ जाएगा. सपोज इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ए पॉजिटिव प्लेट है, ए नेगेटिव प्लेट है, एंड यू नो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट एंड डाइलेक्ट्रिक में reduced by k times e naught by k. ओके, एंड बाहर बाहर भी ई नॉट थे नॉर्मली. ओके, नाउ इसका मुझे डाइलेक्ट्रिक बनाने का, दिस प्लेट इज नियर ओनली, अगेन बीच में स्पेस नहीं है, ये पूरा फील्ड है, ये नेगेटिव प्लेट है, राइट. इसका थिकनेस मान लो डी, पूरा एयर का, इधर गैप नहीं है एयर का, एंड इधर भी डी है थिकनेस. मुझे इसका ग्राफ चाहिए, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ चाहिए. ओके, सो ड्रॉ करेंगे ई वर्सेस एक्स का ग्राफ. ओके, मान लो दिस इज एक्स इक्वल 0, इनिशियल प्लेट इज एक्स इक्वल 0. ओके, 0, एंड इधर से इधर तक एयर में डी 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 है, एंड इधर से पूरा थिकनेस कितना, 2d. इसी में होगा ना कहानी पूरा, डी एंड 2d में होगा, राइट. डी एंड इधर 0 से 2d तक. ओके, नाउ टेल मी फ्रॉम 0 टू डी थिकनेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. ई नॉट इज कांस्टेंट है वेरिंग ना, ई नॉट इज कांस्टेंट और वेरिंग फ्रॉम 0 टू डी तक. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट ओनली, एयर ओनली, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट, राइट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर तक कांस्टेंट, राइट. हाँ, नाउ क्या होगा आफ्टर, नाउ डी टू 2d, डी टू 2d में हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज बाय k टाइम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज बाय k टाइम्स, एंड बाद में पूरा कांस्टेंट होना, राइट. डिक्रीज होके कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो मतलब थोड़ा डिक्रीज करके इधर तक, डिक्रीज करके इधर से 2 तक. दिस इज ई नॉट, दिस इज ई नॉट बाय k, दिस इज ग्राफ. ओके, नाउ पोटेंशियल वर्सेस एक्स ड्रॉ करने वाला है. पोटेंशियल वर्सेस एक्स, अगेन डी कहानी एंड 2d. ओके, यू टेल मी पोटेंशियल, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या है नॉर्मली, डेल्टा वी इज इक्वल टू, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप याद है ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट आर माइनस ई डॉट आर, मॉड लगा रहे हैं. सो डेल्टा वी वी ओनली, इधर मॉड वी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, द पोटेंशियल फॉर एयर में. ओके, एंड यू नो पोटेंशियल क्या होगा फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पोटेंशियल फ्रॉम दिस प्लेट टू डी डिस्टेंस तक, potential will decrease or increase. Potential from here to here, we studied in the starting में, potential decreases in the direction of field. Okay, so इधर से इधर तक डिक्रीज होगा, राइट. तो मान लो इधर से इधर तक डिक्रीज हुआ. ओके, इधर से इधर तक ये थीटा 1 मान लो. कितना डिक्रीज हुआ, दैट इज ई नॉट इंटू डी, राइट. इतना डिक्रीज हुआ, ई नॉट इंटू डी. ओके, नाउ डी टू 2d में डेफिनेटली इट विल डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीजेस. ओके, इसमें क्या होगा, कम डिक्रीज हुआ ज्यादा डिक्रीज होगा, टेल में इधर से इधर तक व्हाट विल हैपन, इट विल डिक्रीज बाय कंपेयर टू दिस वन, विल कम से कम डिक्रीज होगा ज्यादा डिक्रीज होगा, दिस वन विल मोर डिक्रीज, दिस वन विल लेस विल डिक्रीज. व्हाई, देखो इसका पोटेंशियल फाइंड करो, ई नॉट बाई के टाइम्स ऑफ डी, सो वैल्यू और भी लिटिल डिक्रीज होगा, राइट. सो ये वाला उतना स्लोप नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा. दिस इज थीटा 2. सो थीटा 1 थीटा 2 में विच इज ग्रेटर, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2. खत्म. एडवांस में पूछेगा, ये पूरा थोड़ा एडवांस में पूछने वाला है. दे विल गिव द ग्राफ, they will tell which diagram, or they will give the graph, they will tell which slope is more, or they will give the values, they will tell to find slope of that one, this by this बोल के कुछ तो करेगा. ओके, चलो.
potential decreases in the direction of field. Covered? So can you explain once again why theta 1 is Which more? one? This one, Why theta 1? देखो, we know the relationship V is equal to E naught into D from here to here potential, and from here to here potential क्या होगा? E naught by K into D. Okay. Yeah. You tell me from here to here potential decreases in the direction of field, right? Decrease Yes. होगा compulsory, right? Yeah. So इधर से इधर तक decrease किया. I call this as theta 1. Okay. Now comparison में from here to here D to 2D में definitely decreases, but less decreases are more decreases are comparison में potential. If you So see it's decreasing by K, so it will by decrease K, more. Like it will decrease decrease by even K, more. total value will get decreased, right? Totally. So that's why less slope आने के लिए आपको मैं इतना steep नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा कर रहा हूँ. So theta will be less. Theta 1 is greater than theta 2. Okay, कम decrease हुआ, right? Next. Now draw करो, समझ में आ जाएगा. Now you will draw. These are two plates, and we have two dielectrics. And this one, I am putting a metal. This one is a metal. And you know K value कितना होगा? And सभी distance is D. D, 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 and here also D. Okay. Now it is a positive plate. This is a negative plate. Sriram, what happened? Now good only? Health is good now? So health is good, sir. Sir, I what was is- outside before. हाँ Sir, I was outside. ओके आउटसाइड हाँ देखो अभी हॉलीडे साकर आया एंजॉय कर रहे हैं ओके चलो ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा समझ में नहीं आएगा बिकॉज डायरेक्टली प्रीवियस लेक्चर यू सॉ नहीं that's wrong. ये समझ में नहीं आएगा नहीं तो ओके हाँ नाउ इसका ग्राफ ड्रॉ करो देखो आउटसाइड तो इधर से इधर तक ई नॉट है एंड सिंस डायरेक्ट्रिक के इज यूज्ड ई नॉट बाय के इधर ई नॉट एंड इधर ई नॉट ओके एंड यू नो हियर इसका के वैल्यू कितना होगा मेटल का के वैल्यू इज Infinity. इनफिनिट ओके चलो नाउ ड्रॉ फॉर द ई वर्सेस एक्स का ग्राफ ई वर्सेस एक्स का ग्राफ श्रीराम सेकंड चैप्टर में ओनली लास्ट टॉपिक में डायरेक्ट्रिक चल रहा है ओके सो एक बार वीडियोस देखो सिंसियर नोट्स लिखो सिंसियरली एंड फिनिश ऑफ ओके हाँ नाउ हियर हाउ मेनी डीज आर देयर 1 2 3 4 5 ओके x इक्वल 0 सो इधर x इक्वल 0 लगा रहा हूँ ओके हाउ मेनी डीज d 2d 3d 4d and 5d versus x ओके नाउ ड्रॉ करो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत इजी है फ्रॉम एक 0 टू d में इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एयर में है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट सो इधर से स्टार्ट कर लो ई नॉट इज ई नॉट ओके बाद में क्या होगा सडनली डिक्रीज बाय k टाइम्स सो थोड़ा इधर से d टू 2d में डिक्रीज बाय k टाइम्स तो कितना हो गया ई नॉट बाई के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक एक मटेरियल का एक एक k वैल्यू रहेगा ओके नाउ अगेन फ्रॉम d टू 3d इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन ई नॉट एंड कांस्टेंट ई नॉट एंड कांस्टेंट अगेन इसमें बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस में मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउ मच 0. इनसाइड द मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0 राइट सो नीचे आकर 0 हो जाएगा 3 to 4 एंड बाद में अगेन इंक्रीजेस टू ई नॉट टाइम्स ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड नो पोटेंशियल देखेंगे पोटेंशियल वर्सेस एक्स डिस्टेंस का
D, 2D, 3D, 4D, 5D. Potential versus 6. And you know, potential decreases in the direction of field. Definitely potential decreases. So now करो क्या होगा? Now इधर से इधर तक first 0 to D तक potential decreases in the direction of field, थोड़ा decrease होगा, ऐसा decrease होगा. इसका angle मान लो θ1. Okay. Now ठीक है. Now क्या होगा? Here to here decrease होगा, but कम decrease होगा ना? कम decrease होगा. So I'll not put that much steep, थोड़ा steep लगा रहा हूँ ऐसा. θ2. तो मैं ये डिक्रीज होगा बट थोड़ा कम डिक्रीज होगा, राइट. हाँ, नेक्स्ट D to 2D अगेन इट डिक्रीजेस. θ3 मतलब हियर θ1 इज इक्वल टू θ3 एंड सबसे ज्यादा कम वाला θ2, राइट, θ2 वाला. ओके चलो. नाउ नाउ टेल मी फ्रॉम 3D to 4D में पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? हियर टू हियर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बिटवीन देम? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस इज Constant. पोटेंशियल इज कांस्टेंट. देखो डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डी, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, दैट मीन्स डेल्टा V इज इक्वल जीरो, दैट मीन्स V2 minus V1 is equal to 0, that means V1 is equal to V2. So when electric field is 0, the potential is constant. Okay, potential is constant मतलब initial potential कितना है? 8D 4D तक उतना ही रहेगा, constant. Next again from here to here again decreases, potential decreases. Again here θ4. So here I can tell θ2 is less than θ1, θ3 same है and θ4 is also same. Right? Understood? Yes. चलो. Satya, understanding, right? चलो. Very important topic. ये normal में when you read books में you'll understand this all things. Okay. Now आपको ये एक समझ में आने का we are doing now सीरीज एंड पैरेलल में विद डायरेक्ट्रिक वाला कर रहे हैं. सीरीज एंड पैरेलल में विद डायरेक्ट्रिक वाला आपको एक समझ में आने का. सपोज मान लो दिस आर द टू प्लेट्स, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K1, पूरा फील्ड है. सो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा बोले तो क्या करेंगे? आपको नॉर्मली एप्सिलॉन नॉट A by D. Since dielectric material is filled completely, it increases by K1 times. This is the capacitance. पैरेलल का फॉर्मूला सेम है, सीरीज का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ K1 K2 बाजू में आएगा. दैट्स इट. ओके. एंड फॉर्मूला क्या है फॉर पैरेलल? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर C इक्विवेलेंट पैरेलल? C1 plus C2. C1 plus C2. और सीरीज में 1 by C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by C1 plus 1 by C2. चलो. Now different combinations of dielectric we are doing. Questions compulsory. One chapter which you are studying, compulsory one question 100% आएगा. So prepare well. चलो देखो क्वेश्चंस देखने में थोड़ा बड़ा लगेगा बट अंडरस्टैंड. A parallel plate capacitor of area 6 centimeter square. These are the two plates. ऐसा two plates है. Okay. इसका area of cross section the given है 6 centimeter square. And separation between them is दो प्लेट का separation कितना है? 3 millimeters. Okay. Gap is filled with 3 dielectric materials of equal thickness. Okay. मतलब इसका एरिया कितना होगा? टोटल एरिया इज A. इसका क्या होगा? A by 3, A by 3, A by 3. 3 equal thicknesses with dielectric constant K1 given, K2 given, K3 given. Now the dielectric constant of a material which gives same capacitance when fully inserted of the above capacitor would be. Suppose मान लो instead of 3 dielectric, same capacitor, same distance का, if I filled completely with 1 dielectric constant K, at that time he is telling what will be this K
इक्विवेलेंट इज हाउ मच इज आस्किंग, मतलब कैपेसिटेंस सेम बोल रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस सेम है, ही इज टेलिंग टू फाइंड के इक्विवेलेंट इज हाउ मच फाइनली। ओके, ट्राई कर सकते हो। Instead of 3 dielectric, if I filled with 1 dielectric only, at that time इसका कैपेसिटेंस C मान लो, इसका कैपेसिटेंस C1 मान लो, C dash मान लो, so both are same, C dash is equal to C बोल रहे हो। In that condition में is telling what is K equivalent। Okay, चलो first ये series है parallel, how you will identify, tell me। ये series है parallel, why, what basis में you are telling series, what basis में parallel? Tell me the तीनों, how many capacitors are there here? 3 capacitors। okay, series है parallel? Parallel. okay, Sanvi, Satvik, Sir, series. okay, Satvik, anything रखो सर, योर विश, सीरीज रखो पैरेलल रखो, मुझे क्या बोलते हैं, नहीं अंडरस्टैंड करो, आपको सीरीज पैरेलल अंडरस्टैंड करिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंड। आपको ये प्लेट्स है ना, प्लेट्स के क्रॉस यू कनेक्ट ए इमेजिनरी बैटरी, इमेजिनरी बैटरी मान लो, मतलब व्हेन यू ऑन द स्विच द चार्ज विल बी कमिंग हियर, आकर इसमें जाएगा चार्ज, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, चार्ज इज डिवाइडिंग, दैट मींस दिस इज पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट्स। आपको चार्ज से चेक करना पड़ेगा, अगर सीधा सीधा है तो चार्ज सेम जा रहा है तो सीरीज, बट ये वाला पैरेलल है। ओके, चलो फर्स्ट इसका पैरेलल का फाइंड करेंगे, एंड ऑप्शन सेल गिव 4 36 12 14। ओके, चलो नाउ इसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, फर्स्ट कैपेसिटेंस C1, टेल में C1 कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस, ये दो प्लेट है, मान लो फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक K1, सो एप्सिलॉन नॉट A by 3 by एप्सिलॉन A by D, राइट, D मान लो, बाद में लास्ट में सब्सट करेंगे वैल्यूज। ओके, सिंस डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय कितना, K1 टाइम्स K1, राइट, एंड नॉर्मल एयर में कितना है कैपेसिटेंस, एयर में C नॉट मान लो, एप्सिलॉन नॉट A by D, this is a normal air capacitor, right, epsilon A by D। now I can write like this, C1 is equal to epsilon naught A by 3D times K1, that means epsilon A by D की जगह में I am substituting C naught, so C1 is C naught by 3 times K1, right। now similarly C2 capacitance बोलो, सीधा बोलो C2 capacitance, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, देखो ये दो प्लेट्स हैं, सी नॉर्मल कैपेसिटेंस फॉर्मूला इज एप्सिलॉन नॉट A by D, दैट इज फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वो तो पक्का आने का, एप्सिलॉन नॉट A by D, हियर A इज A by 3, D is D only, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज D, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे D वैल्यू, एंड व्हेन आई इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक वो K2 टाइम्स बढ़ जाएगा, सो क्या होगा, सेम थिंग, एप्सिलॉन नॉट A by D times K2, if I substitute again C naught, I'll get C naught by 3 times of K2, yeah। now tell me C3 का कितना होगा, anybody, C3 कितना होगा इसका, सेम थिंग अगेन, C naught by 3 times K3, समझ में आ रहा है, ओके। now इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, here A is the area, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, tell me, C dash मान लो, C dash is equal to epsilon naught, इधर A is A only, D since I use K equivalent times बढ़ जाएगा, that means C naught times of K, right। हाँ, now पैरेलल का what is the formula, तीनों का पैरेलल का कॉम्बिनेशन क्या होगा, तीनों ऐड करने का, ऐड करो, so कितना होगा, C naught by 3, if I take common, C naught by 3 is into K1 plus K2 plus K3 is equal to, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C naught times of K equivalent, so C naught cancel, so K equivalent will be K1 plus K2 plus K3 by 3, so 10 plus 12 22 32 36 by 3 कितना होगा 12, right,
So 12 is the answer. So 12 is the answer. ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैरेलल है, पैरेलल में डेफिनेटली आपको C1 प्लस C2 प्लस C3 करने का। आई रोट इजी होने के लिए C1 C0 टर्म्स में यूज करके वी सॉल्व, इट विल बी इजी फॉर यू। अदरवाइज पूरा पीपल क्या करेगा, C1 को दे सब्स्टिट्यूट एप्सिलॉन 8.85 into 10 power of A वैल्यू D वैल्यू, पहले पहले डोंट सब्स्टिट्यूट, ऐसे प्रॉब्लम्स में डोंट सब्स्टिट्यूट, पहले D ले लो, सभी सेम मॉडल करके लास्ट में पूरा कैंसिल करके देन वन सब्स्टिट्यूट, इजी हो जाएगा। ओके चलो कॉपी करो और सेम मॉडल करो, देखते हैं। सीरीज है तो यूज द 1/c इक्वलेंट इज इक्वल टू यूज करके सॉल्व करने। ऑलवेज विल टेल लाइक दिस ओनली, 3-4 के बाद डायरेक्ट्रिक करेगा एंड ऑल कंपेयर्ड विद ओनली वन डायरेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस इज सेम ओनली, दैट्स व्हाई वी आर इक्वेटिंग दिस कैपेसिटेंस इक्वल दिस कैपेसिटेंस, इक्वेट कर रहे हैं। ओके चलो कॉपी डो शिवम, चलो बताओ। नाउ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया ए है, ये डायग्राम में दिया a/2 a/2 and 1, this is a and this distance is d/2, total distance between two plates is d. Now you should tell which one is series, which one is parallel. So 3 capacitors are there, right? C1 C2 C3, 3 capacitors are there. Which one is series, which one is parallel? He's asking the same thing. If the single dielectric material is used in have same capacitance, मतलब instead of using all the capacitors, I'll use single dielectric, which I call K equivalent. इसका area is A and distance is D. He's asking capacitance is same. In that condition में trying to find the K equivalent. K equivalent is how much? Okay, tell me. सीरीज पैरेलल बोलो, साथ ट्राई करो। C1 C2 C3 में सीरीज पैरेलल और कॉम्बिनेशन Parallel C3 is series. yes, good. So when I connect an imaginary battery, the charge आएगा, चार्ज जाकर इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, that means these two are in parallel. आने के बाद दोनों मिलके again the same charge will flow, right? So ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको पैरेलल करके then series with this and add आ जाएगा। ना करो, I want in terms of K में, options will be in terms of K1. 1/K is equal to 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3, ऐसा K टर्म्स में आएगा आंसर। 1/K ये दोनों ऑप्शन में रहेगा, राइट। ओके श्रीराम बोलो, फर्स्ट कैपेसिटेंस बोलो, C1 बोलो। C1 is equal to, tell me what is the formula normal air में, epsilon naught A/D. In this capacitor, these two parallel plates बीच में material is there, so tell me epsilon naught A/2 into K1 by divided D करो, by D/2, right? by D/2. Into times of K1. Okay, so ये 2 get cancel, epsilon A/D is nothing but C0 times of K1, right? C0 times K1. Okay, C2 बोलो, C2 also will be same only, same area, same distance, so C0 times of K2, right? ये दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल का सीक्वेंस विल बी दोनों ऐड करने का C0 K1 प्लस C0 K2, ये दोनों का पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो गया, राइट? नाउ दैट इज सीरीज विद दिस वन। ओके C3 कितना होगा, C3 is how much? Epsilon naught A by distance between them is D/2 only times K3. इधर कितना होगा, 2 times, right? So 2 C0 K3 होगा, राइट? समझ में आया? ये 2 ऊपर जाएगा, 2 C0 K3. Now this and this are in series. Series का what is formula? 1/C equivalent is 1/C equivalent is equal to 1/C1. C1 is C0 K1 plus C0 K2
प्लस 1/C3, right? ये दोनों, this is one capacitor, this is one capacitor, right? 1/C1 plus 1/C2, so 2C0 K3. Okay, and what is C equivalent इसका C equivalent कितना होगा? epsilon naught A/D times K equivalent, and I call that as C0 times of K equivalent, right? So इसका C equivalent के जगह में 1 by, मैं क्या करूंगा, C equivalent के जगह में 1 by C0 times of K equivalent. So C0 cancel. So therefore 1 by K equivalent is nothing but K बोल के दिया क्वेश्चन में, 1 by K1 plus K2 plus 1 by 2 K3. देखो दिस इज आंसर. सी के बोलने से आपको एग्जाम में टेंशन लगा रहा है, के इक्वल क्या, कुछ नहीं, मटेरियल लगाया, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, के टाइम्स बढ़ जाएगा, दैट्स इट. नॉर्मल कैपेसिटर ओनली, डोंट थिंक समथिंग, एक मटेरियल है, दैट्स इट, उसकी वजह से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. सो नॉर्मल फॉर्मूला लगा के इनटू K1 इनटू K2 एंड सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ओनली, नथिंग न्यू. ओके, क्वेश्चंस करने रिवीजन टाइम में थोड़ा, मैं 1-2 क्लासेस में आई विल मेक यू रिवीजन, आई विल गिव क्वेश्चंस लाइक कंप्लीट चैप्टर में मिक्सिंग टुगेदर दूंगा ना, थोड़ा माइंड ट्यून हो जाएगा. आप इसलिए प्रिपेयर करो. आई आफ्टर फिनिशिंग चैप्टर आई विल मेक थोड़ा फर्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देने का, नहीं तो लेट हो जा रहे हैं. ओके, चलो, अंडरस्टूड राइट? चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक लिखो. डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड विथ बैटरी कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड. 2 टॉपिक्स बचा है, दिस वन एंड नेक्स्ट वन, कल हो जाएगा चैप्टर. तो अभी क्या कर रहा हूं, बैटरी 2 केसेस में ले रहा हूं. 1 केस में बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, डिस्कनेक्ट करके देन आई विल इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक. फर्स्ट केस में दैट टाइम व्हाट आर द वेरिएबल्स विल चेंज, वी आर सीइंग, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, एवरीथिंग वी विल लर्न फ्रॉम दिस. सिमिलरली नेक्स्ट केस में क्या करने वाला, बैटरी कनेक्ट करके आई एम इंसर्टिंग ए डाइलेक्ट्रिक. सी दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंट इंडस्ट्रीज में, कैपेसिटर बनाने टाइम में दे आर सीइंग व्हाट आर द वेरिएबल्स चेंजिंग, कुछ फायदा होगा, कुछ क्या होगा बोल के दे आर सीइंग वेरिएबल्स. ओके, इन दैट में वी हैव टू नो. ओके, सो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड देन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड स्लोली, वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर बिफोर एंड आफ्टर का वी आर सीइंग. ओके, हियर बैटरी पहले कनेक्टेड था. ओके, बैटरी कनेक्टेड था एंड ऑल वी कैन कॉल नॉट बोल के लगाता हूं, वी नॉट. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को इज अ पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट बोल के लगा रहा हूं एंड चार्ज इनिशियली प्लस क्यू नॉट. नॉट क्यों लगा रहा हूं, एयर में नॉट है, माइनस क्यू नॉट. ओके, एंड इसका कैपेसिटेंस इज सी नॉट and distance between them is d. Okay, now initial variables, what are the things we'll write? See, initial charge कितना था, q naught. Second one, initial capacitance को I call as c naught, and here epsilon naught a by d. This is the initial capacitance. And initial potential को we call as v naught. And in terms of q naught and e naught, c naught के terms में, what is the v naught is nothing but c equal to q by v, v equal to q by c. So q naught by c naught. These are initial conditions. And electric field initial कितना था, e naught. Okay. And if we talk about energy also, initial energy, we will see. Initial energy के बारे में learn करेंगे. Okay, you tell me, initial energy कितना होगा, q है, c is there, q and c is there. So we have 3 formulas, right? q and c से कौन सा बनेगा, q and c से Q square by q square by 2c. So initial q naught square by 2c naught, right? This is the initial energy. Now क्या करूंगा, I am inserting a dielectric, but condition क्या है, battery disconnected. Okay, now क्या करूंगा, ये कैपेसिटर है, now I am inserting, मैं बैटरी रिमूव कर दिया,
I am inserting a dielectric. I am inserting dielectric. Okay. Now battery remove करने से which variable is constant? Out of these variables में which variable is constant? Tell me. Battery disconnected from here to here. Which variable is constant? मतलब think of phone battery. Phone battery charging suppose 75% हुआ. If I remove the plug, बंद करके remove कर दिया charging में, the charge will be same or not? Charge will be same. So whenever battery disconnect किया, Q is constant always. याद रखो. So questions में they will ask sometimes, they will not mention battery is removed. They will tell the charge is constant. मतलब indirectly we are talking about this case only. Indirectly we are talking about this case. Okay. Okay. मतलब initial charge कितना था? Final charge भी उतना ही है. Q0 minus Q0. Okay. Now dielectric insert करने से, थोड़ा insert कर रहा हूँ. Insert करने से क्या होगा? Polarization होगा first step. Polarization minus will be coming this one. Plus will be coming this side. Yeah, the charge is getting induced. And we talked about sigma I. Anybody formula? याद है? Sigma I का formula? Induced surface charge density. Sigma 1 minus 1 by K. No. Sigma 1 ना. Sigma into sigma induced. That is 1 नहीं induced I. Sigma I writing थोड़ा ऐसे रहेगा. मेरा writing. Sigma I is equal to sigma times of 1 minus 1 by K. Okay. Sigma is original capacitor का. Sigma I is induced surface charge density. Sigma I is equal to बोल के लगाने का. Sigma I is equal to sigma times 1 minus 1 by K. Okay. चलो. उसका बात नहीं. Now क्या होगा? First polarization will happen. Okay. Now ये क्या करेगा? This plate will attract like this. This plate like this. And this one क्या करेगा? ये plate इसको, ये dielectric को इस तरफ attract करेगा. So finally, the capacitor किस तरफ खींचेगा? Dielectric को down करे तरफ खींचेगा. Capacitor को zoom बोल के खींचेगा. Okay. But मतलब when we are inserting, ये capacitor is applying a force to pull the dielectric. Okay. Indirect because of these plates. इधर तक understood? Understood? Clear? Okay. But our intention क्या है? We have to insert very, very slowly. Otherwise, क्या होगा? I told you, kinetic energy में some work is gone. So this some definitions will be wrong हो जाएगा. That's why we have to insert very, very, very slowly. So उसके लिए we are applying an external force, which is almost exactly equal to the electric force. Electric force or capacitor force बोल सकते हो. Capacitor is applying a force, right? Yeah, almost equal. Then only it will apply धीरे we can put this dielectric inside. Okay. Now tell me क्या variables है? QF कितना है? Final is Q0 only. Now second variable capacitance क्या होगा? Tell me इसका dielectric constant K. Capacitance क्या होगा इसका? When you insert dielectric, what will be the capacitance? Epsilon naught A by D. Since dielectric K is inserted fully, K times बढ़ जाएगा. That means इधर epsilon A by D is nothing but C0 बोला ना. So K times of C0. देखो capacitance बढ़ गया. Okay. Now we will see the potential. Final potential. Final potential क्या होगा? QF by CF. QF is Q0 by CF is K times of C0. And what is Q0 by C0 is nothing but V0. So V0 by K हो गया. देखो potential decrease by K times. This is like same case before we done, right? Same initial introduction किया ना. ये वाला ऐसा same होगा. But second case में उल्टा हो जाएगा. पूरा wrong हो जाएगा. मतलब different हो जाएगा. So that's why don't by heart always decreases this one. If electric field decreases बोल के. Okay. Now electric field क्या होगा then? If potential decrease by K times, electric field also decrease by K times. So E0 by K. If I use the relation between potential difference and electric field, if this is decreased by K times, this also decreased by K times. Okay. Now we'll talk about the energy, final energy. So tell me final energy कितना होगा? QF square by QF square by 2CF square. 2QCF, right? Q square by 2C, right? So QF square is nothing but Q0 only. So Q0 square by 2 times of CF is nothing but K times of C0. So देखो Q0 square by 2 C0 is nothing but initial energy. I call this as U0.
इनिशियल एनर्जी को यू नॉट बोलता हूँ. सो देयरफॉर फाइनल एनर्जी क्या हुआ? U naught by K. Energy got decreased. The potential energy got decreased by K times. Okay. So when you remove battery and when you insert dielectric, the potential energy got decreased by K times. Now, what is the change in potential energy? UF minus UI is equal to, so U naught by U naught common लूंगा, final minus initial, right? U naught common लूंगा तो क्या होगा? 1 by K minus 1. And what is U naught? U naught is nothing but Q naught square by 2C naught. So Q naught square by 2C naught into 1 by K minus 1. This is the formula for change in potential energy. Formula by करना पड़ेगा. Q naught square by 2C naught into 1 by K minus 1. And this change in potential energy is negative. देखो, K is greater than 1, right? So LCM लिया तो will get negative value. Changing because final minus initially you are doing, right? Final is decrease. Lesser minus bigger is nothing but negative. So Q naught square by 2C naught into 1 by K minus 1. ये फॉर्मूला शीट दे दिया ना आपको पूरा? Now here question is, initial energy U naught था, potential energy decreases by K times. Where is that energy decreased? Where is that went away? Where is that energy went away? पहले एनर्जी इतना था, कैपेसिटर बहुत अच्छा था, बाद में इंसर्ट करने के बाद इसका एनर्जी गॉट डिक्रीज बाय K टाइम्स. वेयर इज दैट एनर्जी वेंट अवे? लॉस्ट हुआ ना, एनर्जी किधर गया? एक बेटा, वेयर इज द पोटेंशियल एनर्जी वेंट अवे? वेयर इज द पोटेंशियल वेंट अवे? सी, द एनर्जी इज यूज्ड बाय द कैपेसिटर टू पुल द स्लैब. वो एनर्जी वर्क किया ना टू पुल द स्लैब, सो उसमें एनर्जी गया. सी, व्हेनेवर वी आर डूइंग वर्क, द एनर्जी इज लॉस्ट, राइट? So capacitor is doing work to pull the slab. So that's why that energy, some of the energy went away and some is stored, right? So formula आपको learn करना पड़ेगा. लिख लो ये वाला first. Okay. So final formula आपको learn करो, that work done by external force is equal to minus of work done by electric force. Electric force is nothing but capacitor का work done. Negative of work done by capacitor, that is equal to change in potential energy. देखो, change in potential energy is nothing but work done by external agent only. External force का देखो, work done, force is ऊपर, displacement is नीचे, work done will be negative, right? So if you solve, if you subtract, you will get negative only. This is nothing but work done by external agent का. Okay, but electric force का work done is positive because ये negative cancel हो जाएगा. Work done by electric force is positive. समझ में आया? See, why work done is negative, ये समझ में आ रहा है? ये वाला पुल कर रहा हूँ ना, देखो force ऊपर, displacement नीचे, the work done by external agent is negative. That's why the change in potential energy you got is negative. Work done by external agent. Now work done by electric force क्या है? Force and displacement are in the same direction. So इसका positive आएगा. So if you substitute in the formula also, you will get a positive value only. Work done by, देखो ये वाला negative आएगा ना आंसर substitute करने के बाद, minus and here minus cancel होगा. Work done by electric force is positive. फॉर्मूला में ऐड करो, खत्म हो जाएगा. तो इसका बेस में क्वेश्चंस करना पड़ेगा. Nearly PYQs only you have nearly 100 questions तक है पूरा, 100 questions तक है. If you done एक सिंसियरली कभी भी टेस्ट में भी, स्कूल का एग्जाम में भी, नोट्स पढ़ के फॉर्मूला बैठ करके वो PYQs का ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट के साथ मिनिमम PYQs करने के बाद एक बार स्कूल का एग्जाम लिखो और बाहर का एग्जाम लिखो, आपको 1 ही आएगा, रैंक 1 ही आएगा. देयर इज नो अदर वे.
सो बट हमारा एक रेसिस्टेंस है, वो ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा करके नहीं बोर कर रहे, आधा करके 1 2 ऐसा करके वो निकल गया तो निकल गया। ऐसे एक बार कोशिश करो मरे। चलो हो गया। सो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बैठ करो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, Q नॉट स्क्वायर बाय 2 C नॉट इनटू 1 by K minus 1 इज द फॉर्मूला। ओके हाँ सर बोलो। Sir, can you explain again why the slab is getting pulled down? पुल डाउन बोल के ना, Yeah. देखो देखो when I insert dielectric polarization will happen, right? Minus will be coming this side, plus will be coming this side. ये प्लेट इसको क्या करेगा, माइनस एंड प्लस, Induce. ये प्लेट क्या करेगा, इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। देखो Yeah. opposite plates always attract, right? Opposite Yeah. plates always attract, so resultant force, net force will be downwards. Okay. मतलब who is pulling, capacitor is pulling, electric force is pulling. Okay, Right. that's why नीचे आ रहा है। चलो now न्यूमेरिकल्स करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व करो। These are all mains questions only. A parallel plate capacitor having capacitance 12 picofarads is charged by a battery through a potential difference of 10 volts. आपको हमेशा you have to draw the diagram, reference के लिए आपको easy होगा। So a parallel plate capacitor is there, it is connected with a battery, कितना volts है, 10 volts, and इसका capacitance value they given as 12 picofarads. Okay, and I call this as C naught, right? And this is plus Q naught minus Q naught. Okay, इधर तक आया। Now charging battery is now disconnected and porcelain slab, मतलब dielectric is inserted with dielectric constant, मतलब he only told battery disconnect करके he is inserting the dielectric. Okay, अच्छा only बैटरी डिस्कनेक्ट करने से क्या कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। सो इट इज प्लस Q नॉट माइनस Q नॉट, इसके अंदर में डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K which is nothing but 6.5. Slip between the plates, work done by the capacitor, मतलब work done by electric force is asking, work done by capacitor on the slab, so work done by आपको electric force is asking. सॉल्व करो, work done is nothing but energy change in potential energy only, use the formula and solve. I'll give options, 560 picojoules, picojoules but 10 power of minus 12. So we know this one, right? Negative work done by negative of work done by electric force is equal to change in potential energy, Q naught square by 2 C naught into 1 by K minus 1. Use the formula and solve. चार्ज में पीको में दिया 10 पावर ऑफ माइनस 12 यूज करना पड़ेगा। इन जेई एडवांस में like it is 360 marks पेपर इट सीम्स, दिस पे इस 360 मार्क्स में कितना मार्क्स में आया तो आईआईटी आ रहा है मिनिमम, कितना रैंक आने का, रैंक बोलो अभी दिस साल रैंक में 10,000 बिलो। ओके 10,000 बिलो में आईआईटी आ जाएगा, कोई भी आईआईटी, बिकॉज सो मेनी आईआईटीज आर देयर, थोड़ा दूर का आईआईटी आएगा बट 10,000 में आ जाएगा, 10 रैंक में। 10,000 8,000 10,000 में कितना इस बार मालूम है, 115
आउट ऑफ 360 में 115, मतलब यू डिवाइड विथ 4, टेल मी हाउ मच, 4 2 जा 8, 9 10 11 3 35, 4 8 जा 32, मतलब 28 क्वेश्चंस टोटली आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, 28 क्वेश्चंस आंसर किया तभी वो लोग आईआईटी आ जा रहे हैं। सी आईआईटी में क्वालिफाई होना एक बात है, दूसरा मेनी पीपल विल नॉट राइट आईआईटी एंड बिकॉज नहीं आएगा छोड़ देंगे बोल के ऐसे छोड़ देगा, एंड जो पीपल है उसमें आपको 100 110 आए तो भी आईआईटी आ जाएगा, कुछ नहीं, देयर इज नथिंग। ओके, सो इट्स इजी आफ्टर गेटिंग द जेई मेंस, आईआईटी में इजी है, वेरी ऑल क्वेश्चंस करने की जरूरत ही नहीं है, 100 मार्क्स नहीं आ सकते, 360 मार्क्स में इतना क्या आ जाएगा। चलो चलो सब थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा करो। So 508. 508, 508 pico. yes correct, 508 picojoules. So all values are given, k value is given, c naught value also given, the substituting and calculating. Okay, that is 508 picojoules is answer. Okay, chalo other next one. This is also JEE mains question. Capacitor of capacity C1 is charged up to a potential V volts and then connected in parallel to, okay, first capacitor C1 है, capacitor C1 is charged to a potential V volts. Okay, now what he done, then connected in parallel to the uncharged capacitor C2, मतलब indirectly battery is removed, battery remove करके he connected this capacitor, इसका potential is V, fully charge potential हो गया। okay, मैं क्या किया, ये battery remove करके I connected with a uncharged capacitor C2, okay, this is C1, then definitely after connecting battery remove कर दिया, potential will change, right, potential will change because uncharged capacitor है, ये लगाया। okay, so V dash मान लो, V dash मान लो, he's asking final potential difference across each capacitor, V dash is how much, is asking V dash is how much, okay, in terms of V C1 C2 में चाहिए, V1 C1 C2। okay, whenever battery is removed, which one is constant, Q is constant, so इधर चार्ज कितना है वो डिस्ट्रीब्यूट करके चार्ज, फाइनल चार्ज तो सेम है बिकॉज इज अनचार्ज कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कितना चार्ज हुआ, when I connected the charge with uncharged capacitor, some charge get distributed but total charge is same, so इधर चार्ज कितना होगा, Q equal to how much, charge is how much, C equal to, this formula तो हमेशा यूजफुल है, C equal to Q by V, Q equal to CV, so C1 into V is the total charge, initial charge। now V dash का फॉर्मूला कितना होगा, V dash का फॉर्मूला इज Q by, ये दोनों कॉम्बिनेशन है ना, C इक्विवेलेंट, बिकॉज पोटेंशियल इज सेम दोनों में पैरेलल, दैट्स व्हाई V dash लगाया। ओके, so what is the how much charge will flow in both means Q by C equivalent, how much potential is Q by C equivalent, now Q तो सेम है दोनों में, so C1 V by C equivalent is how much पैरेलल में, C1 plus C2, खत्म, दिस आंसर। okay,
C1 V by C1 plus C2। कुछ नहीं है, ये बैटरी रिमूव केस है, बैटरी रिमूव चार्ज सेम है, ये चार्ज इसका यूज करने का पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला वी नो दैट Q by C इक्विवेलेंट, Q तो सेम है, C इक्विवेलेंट तो दोनों का। ओके चलो और एक क्वेश्चन करेंगे। So in the previous question, हाँ V dash plus V dash would be equal to V, right? B डैश Plus V dash will be equal to V. Is वो सीरीज में होगा, ऐसा इसमें नहीं होगा। V डैश प्लस V इज नॉट V, सीरीज में दोनों में V डैश प्लस V इज V, बट इसमें नहीं है, ये अनचार्ज कैपेसिटर है। ओके इनिशियल कुछ भी नहीं है, बाद में चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पोटेंशियल विल बी सेम, वो पोटेंशियल वी फाउंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके ठीक है, इसका और एक क्वेश्चन इज देयर एंड वो सेकंड केस भी नेक्स्ट क्लास में खत्म करने वाला है। टुमारो विल फिनिश अप कंप्लीटली, टुमारो हो जाएगा कंप्लीट।